ओके सो हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का इन पार्ट 2 ऑफ बायोम्यूटेंट। तो गाइस हम लोग बहुत ही एक सुंदर एंड बहुत ही ताकतवर तलवार के साथ हम लोग खड़े हैं। एंड गाइस पार्ट 1 में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 में हम लोग जो है इधर से आए थे, मतलब ये नीचे थे हम लोग पहले। तो हम लोग बहुत सारे मतलब चीज़ हमने एक्सप्लोर की। वैसे तो मतलब एक छोटा सा टनल टाइप था, तो हम लोग उसके अंदर गए थे लास्ट पार्ट में। एंड अभी Know that the tree of life Okay. is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world Okay. eaters. ओके तो गाइस अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सीन हुआ था पार्ट 1 में। थोड़ा मैं और मतलब अच्छे से बताता हूँ। ओके, प्रेजेंटेड बाय एक्सपेरिमेंट 101। तो लग रहा है कि अब जाके ये एक्चुअल में चालू हुई है गेम। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। तो देख सकते हो कि कितनी सुंदर जगह है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये पूरी जगह। तो लास्ट पार्ट में गाइस, लास्ट पार्ट में हमें पता चला था कि ये जो पूरी जगह है, तो इस जगह में ये पूरा डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में वो कैसे हुई थी। तो एक कॉरपोरेशन था, टॉक्सनॉल कॉरपोरेशन, जिन्होंने बहुत सारा वेस्टेज टॉक्सिक वेस्ट पूरा डंप कर दिया था ओशन में, जिसकी वजह से बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस पूरी जगह पे। एंड अभी जितने भी वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स है, जितने भी स्पीशीज़ है, जो भी बोलो एनिमल्स है, वो सब लोग जिंदा है ये ट्री ऑफ लाइफ की वजह से। तो ट्री ऑफ लाइफ एक बहुत ही ह्यूज ट्री है जो जो ग्रो होते रहता है। एंड कुछ वर्ल्ड ईटर्स की बात हुई थी। तो वर्ल्ड ईटर्स, एक मिनट, A signpost maps it out for the cartographically challenged. ओके तो वर्ल्ड ईटर्स की बात हो रही थी। तो वर्ल्ड ईटर्स कुछ ऐसे एनिमल्स, या तो ऐसे बोल सकते हैं बड़े एनिमल्स या तो बड़े मॉन्स्टर्स, पता नहीं क्या बोले, ऐसे क्रीचर्स है जो इस ट्री ऑफ लाइफ को शायद से डैमेज कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैमेज पहुंचा रहे हैं बेसिकली। तो हमें जो है उन वर्ल्ड ईटर्स को ख़त्म करना है एंड ट्री ऑफ लाइफ को बचाना है। तो वैसी कुछ स्टोरी है। एंड फिलहाल हम लोग जो है चलते हैं उस साइन पोस्ट के पास, ताकि हमें पता चले हमें कहाँ पे जाना है आगे। इंटरैक्ट, एक मिनट। Let's see. Okay, signposts are found near locations of interest all around the world. You will unlock a signpost while interacting with it. You can fast travel to a signpost you have unlocked by selecting it on the map. To open the map at any time, press OK. तो ये रहे हम लोग फिलहाल इधर है। एंड कुछ अलग अलग नाम दिए गए इन जगहों के। तो देखो गाइस, मैं जैसे बता रहा था ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, तो ये रहा ट्री ऑफ लाइफ। देखो ये जो बीच में ये बड़ा सा ट्री है ना, ये ट्री ऑफ लाइफ है। एंड इसके रूट्स है, ये सारे इसके रूट्स है। ठीक है, ये पहला रूट है, फिर ये दूसरा रूट है, एंड ऐसे 4 रूट्स है। तो ये चारों रूट्स अलग अलग जगह पे कॉर्नर में जा रहे हैं। तो इन्हीं सब कॉर्नर्स में वो वर्ल्ड ईटर्स फैले हुए। तो एक एक करके हमें सबको मारना है। एंड वही शायद से हमारे मेन बॉसेस रहेंगे इस गेम के, वर्ल्ड ईटर्स। तो बहुत ही ह्यूज है वैसे देखा जाए तो ये मैप। तो फिलहाल हम लोग इधर है, तो हमें जाना कहाँ है वैसे। ठीक है, प्लेस, ठीक है हम लोग ऐसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। ओके ठीक है, फिलहाल हम लोग कहीं पे नेविगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले तो घूमने वाले। देखो टॉक्सनॉल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा था, तो उन्हीं कॉर्पोरेशन का ये पाइप है, ये बड़ा सा। मतलब देखो ऊपर ब्रिज है। बेसिकली इधर ह्यूमंस रहते थे, लेकिन ह्यूमंस जो है सबके सब शायद से पता नहीं क्या हुआ था, वो बड़े से डिस्ट्रक्शन की वजह से ह्यूमंस पे शायद से कुछ असर हुई। ओह, 3 सर वाला मॉन्स्टर आ चुका है। शिट,
must be the world eater that chewed off out-of-date Okay, leg. okay. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. तो देखो वो एक वर्ल्ड ईटर था, अभी आपने देखा वो 3 सर वाला जो मॉन्स्टर था वो वर्ल्ड ईटर था, एंड उसी ने जो है मतलब लास्ट पार्ट में हम एक दूसरे बंदे से मिले थे, बंदे नहीं मतलब एक एनिमल टाइप था, तो उससे मिले थे एक कैरेक्टर से, उसका एक पैर जो है कट चुका था, तो उसने वो स्टोरी बताई थी कि एक मॉन्स्टर ने मुझे एक मॉन्स्टर था एक वर्ल्ड ईटर जिसने मेरा ये पैर उसने मतलब काट लिया था उसने उसका पैर, तो ये वही मॉन्स्टर था जिसकी वो बात कर रहा था। ठीक है, तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव है एग्जामाइन द विलेज, तो ये रहा विलेज। That's not the first nor the last village it'll leave in its ओके, wake. विलेज जैसा कुछ बचा ही नहीं है, मतलब बहुत खराब कर दिया है हाल। देखो ये पूरा ब्रिज पूरा टूट चुका है, इधर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था जैसे मैंने बताया। अभी जैसे हम आगे जाएंगे वैसे और हमें ग्लिम्पसेस और इमेजेस दिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। चलो। Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. बहुत क्यूट लग रहा है, चलो देखते हैं, मिलते हैं इससे। टॉक टू द सर्वाइवर। He's heard the ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैंने गलती से एक्स दबा दिया। योर इनर बैलेंस इज टू halves that complete a fullness that flows through all things. Okay. ठीक है। He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interacting with captives and PSI shrines will award you with PSI points. Okay, unlock psionic powers. ठीक है। Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. ठीक है, let's help him. He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Okay, तो हमने एग्री तो कर लिया है। That's a spark of light in you. अच्छा, I like the light, या तो too much already. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Okay. PSI point unlocked. You have gained a PSI point. Use it to unlock powers in the mutations menu. Okay, I can only unlock powers of the same color as you. ठीक है। There's out of date. ये again. रहा। He must have missed something important. यप जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका पैर काट लिया था वो ये। Out of date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are 2 nearby. Okay. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. Okay, तो कुछ ट्राइब्स की बात हो रही है कि हम लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way.
Wherefore, whereway? Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. Weta gono. Maoya. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Boyubut paikatawa. Yuba dolubawa. He can sense you share Myriad's view on the world. The Myriad would embrace someone willing to fight against the tyranny of the Jagni. Yeah. So what up, Mua? Boyubut paikatawa. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Tolidrea. Ya Maoloa. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Okay guys, quest tracking, your current and started quest shown in the journal. You can change which quest you track by opening the journal. Okay. ठीक है, तो गाइस हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स है फिलहाल. या तो हम जो है जैगनी ट्राइब के पास जा सकते हैं या तो मिरियाड के पास, मिरियाड ट्राइब. सो ये दो ट्राइब्स है. फिलहाल हम लोग सोचे इधर ही चलते हैं, मिरियाड के पास. ओके, एक मिनट. Yep. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? तो हमारे पास दो रास्ते हैं. एक मिनट यार, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस. दो रास्ते हैं, ये तो कहीं और ही जा रहा है एंड ये कहीं और. ओके ठीक है, मैं सोच रहा हूँ हम लोग इधर से ही चलते हैं. ठीक है, जो हमने मार्क किया है वही पे हम लोग जाएंगे. एंड ठीक है, इधर चलते हैं फिलहाल. तो इसमें चॉइसेस बहुत बनाने होते हैं हमें, मतलब चॉइसेस वाला गेम है थोड़ा सा. ये कन्वर्सेशन बहुत सुननी होती है हमें कि सामने वाला कैरेक्टर हमें क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है. उस हिसाब से हमें जो है चॉइसेस It's बनाने. unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. ठीक है, तो ओके, ये क्या आ रही है लाइट ऊपर से? ये कुछ अलग ही है, पता नहीं, ऊपर अलग ही रिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है, चलो चलते हैं. ओह, आ गए. अच्छा, ये लड़ाई कर रही है क्या? ये एक दूसरे को मार रहे, क्या कर रही है? पता नहीं इनको मारना है कि नहीं. Slash and dash. Don't stop pounding that one. Okay. Chop it up. ओके तो पता नहीं, मैं भी ऐसे ही बीच रास्ते में फाइट में घुस गया एंड पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं. अभी ये अच्छा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही घुस चुका था फाइट में. ठीक है, तो कोई मतलब नहीं था वैसे फाइट करके. चलो अभी चलते हैं आगे, मेन हमें आगे ही जाना है. एंड धीरे धीरे ऐसा लग रहा है रात हो रही है या अब रात हो चुकी है. ओह, ये नॉर्थन लाइट्स ऐसे दिख रहा है ये ऊपर, पता नहीं ऐसा ही कुछ है. जो भी बोलो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. कितने सारे मेज टाइप बनाए इन्होंने. ओके ठीक है, चलो.
चलो शॉर्टकट लेते हैं सीधा. That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. ठीक है. ओके फाइनली पहुंच चुके हैं मिरियाड ट्राइब के इलाके में. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. ओके चलो. तो मतलब इन्हीं मिरियाड के बंदे ही थे वो जो पीछे वो फाइट में लगे हुए थे. हमने उन्हीं को बचाया है वैसे तो. Says they're wary of strangers. They're at war. This Shifu is here. Yeah, इसे पूछना पड़ेगा. Doesn't know if the Sifu will have time for you, but he'll let you in to find ओके out. चलो बढ़िया. तो एंट्री मिल चुकी है अब. लेट्स सी क्या बात होती है. ओके ओके ओके. शिफू जी कहाँ पे? ये रहे. वाह. Sibi, lapanan aking kaman. Kerat na falo putut. Ustukai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. बहुत ज़्यादा यूज है ये तो. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. Okay. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original WUNG-FU disciples. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. अच्छा. For disciples, ठीक है. Disciples की बात करूँ या इसके बात करते हैं? Your Muma invented WUNG-FU. Originally, it consisted of unarmed combat and the six weapons. The boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the world eaters to save the Tree of Life. तो obviously हम लोग join करेंगे मिरियाड को. हम नहीं चाहते कि हम लोग तो जैगनी ट्राइब में जाए. तो let's see, इसी में जाएंगे हम लोग. So here we go. Okay, ally with Myriad. They want to unite the tribes, defeat the world eaters and save the Tree of Life. वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सही है इनका जो भी एम है. Sets the game's end goal to save the Tree of Life. Choosing destiny for defeated rival Shifus is limited to unite or subdue. अच्छा तो इस तरीके से एंडिंग होगा इस गेम का अगर हम लोग इस ट्राइब के साथ जुड़ते हैं. एंड अगर हम जैगनी के साथ जुड़ेंगे तो एंडिंग कुछ अलग तरीके से होगा. तो ठीक है हम लोग इसी के साथ जुड़ेंगे. And here we go. He was hoping you'd join them.
You understand that there's no harm in doing good Yep. to others. Gela was some more about most, Sibi. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. Okay, Jagni tribe. Course मतलब शायद से Sibi, kan boef. Erim denken aufwesse ane. The myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. Okay. शायद से हाथ मिला. यप, हाथ मिला लिया. चलो डील पक्की हो गई. Gela was some more what? Gela not. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. Peace have been forced. Saramoto. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Oh, okay. तो अब कुछ एक्साइटमेंट और बढ़ रही है. Shit. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, WUNG-FU and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Erim denken aufwesse ane. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Porote nat mus. Gine afirma katano shubudo. You were all part of the same tribe once, but without your Muma there as a guide, the disciples turned on each other and formed their own tribes. Gela fuadai. Seeing you brings back his memories of the old village. Porote nat. Merewere yonke. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. Gela wala click click wala papa. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Wala papa. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Gelen denken what nea. He can't blame you for not remembering, but he can sense the stillness of something lost. Okay guys, okay. तो ठीक है, बहुत सारी बातें हुई है एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली है कि अब आगे क्या होगा एंड हमें बेसिकली करना क्या है अभी इस गेम में. यू नो ओवरऑल स्टोरी जो है वो हमें पता चल चुकी है वैसे. ओके ठीक है, किसी के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करना हमें वैसे. हम सीधा जो है चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के पास. ठीक है, बढ़िया. चलो मिलते हैं बाद में. ओके तो गाइस देखो, अभी सीन क्या हो रहा है कि हमने जो है इस मिरियाड ट्राइब का जो राजा है उससे बात की हमने. ठीक है, एंड ये है मिरियाड ट्राइब ये पूरा. तो इसके राजा से अभी हम लोग बात करके आए हैं एंड उसने बताया कि बेसिकली हमने इस ट्राइब को ज्वाइन कर लिया है, इस मिरियाड ट्राइब को हमने ज्वाइन कर लिया है
एंड अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें दूसरे ट्राइब्स के पास जाना है एंड दूसरे जगहों पे जाना है, दूसरे एरियाज़ में, एंड जो राइवल्स हैं उनके साथ हमें शायद से फाइट करना है एंड जो है उसके बॉस को हमें मनाना है, कन्विंस करना है कि वो हमारे ट्राइब के साथ यूनाइट करे। तो फिलहाल एक मिनट Let's see. लेट्स सी, ठीक है। ओके, तो इधर हमें जाना है, ठीक है। ओके, तो देखो ये अलग अलग, ये जो झंडे दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग आउटपोस्ट है। तो हमें इन सारे आउटपोस्ट में जाके जो है राइवल्स को डिफीट करना है। एंड ये भी है एक उसमें से जैगनी, इन सब की राइवल, मतलब जो भी आउटपोस्ट है उनको जो भी मेंबर्स है या तो फिर उनके जो मेन शीफू है, जो भी उनका मेन मालिक होगा पता नहीं, तो उनको हमें डिफीट करना है एंड उनको कन्विंस करना है यूनाइट करने के लिए हमारे ट्राइब के साथ, ताकि हम जो चाहते हैं, मतलब ट्री ऑफ लाइफ को सेव करना, मिरियाड ट्राइब का ये ऑब्जेक्टिव है कि एम है कि वो ट्री ऑफ लाइफ को सेव करे एंड जितने भी वर्ल्ड ईटर्स है उनको वो हरा दे, उनको मार दे, डिफीट कर दे, ताकि ट्री ऑफ लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचे वर्ल्ड ईटर्स से। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इन ट्राइब का। एंड इस गेम में जो है 2 साइड्स है, एक है डार्क साइड, एक है लाइट साइड। तो जो हमने जो है लाइट साइड चूज़ की, मतलब गुड साइड हमने चूज़ की। अगर हम डार्क साइड चूज़ करते तो स्टोरी उस हिसाब से जो है अनफोल्ड होती, तो उस हिसाब से हम लोग प्ले कर पाते। तो 2 ऑप्शंस हम चूज़ कर सकते हैं इस गेम में, या तो हम गुड बन सकते हैं या तो ईवल बन सकते हैं। तो वैसे 2 ऑप्शंस है। अगर आपने देखा होगा रेड डेड रिडेम्पशन में थोड़ा उस टाइप का, उसमें भी गुड और ईवल रेपुटेशन वाला सीन रहता है कि या तो आप गुड बनो या तो बैड बनो। तो वैसा ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आगे। ओके, विजिट योर चाइल्डहुड विलेज। तो अभी हमें जाना है विलेज के पास। एंड विलेज से याद आया, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो विलेज से याद आया कि इसकी जो मॉम है, ये जो कैरेक्टर है, इसकी जो मॉम है, इसकी मॉम वुंग-फू वुंग-फू सिखाती थी, तो उसके बहुत सारे डिसाइपल्स थे। Better beware, that's a Oh. mump up ahead. They were hit hard by Oh evolution. shit, The ठीक है, wild ones मैं बाद में especially. बात करता हूँ आपसे कि क्या हुआ था आगे। फिलहाल मैं इससे निपट लेता हूँ। ओह You're शिट, low on health. अभी लाइफ क्या खराब कर दी इसने। Ready for यप battle again. मैं इससे निपट लेता हूँ गाइस। चल आजा 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 आजा। ओह ओह, ठीक है। भाई साहब मेरी लाइफ जा रही है। मैं कहाँ पे मार रहा हूँ यार? भाई खतरनाक है, वैसे खतरनाक है। It's becoming terminal. भाई रुक 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 रुक। अबे यार बीच में ये पत्थर आ गया यार। फाइनली गाइस, फाइनली हमने इसे हरा दिया है। ठीक है, बहुत यूज था यार। ओके ठीक है, चलो। इससे देखो बहुत सारे ये मिरियाड ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, ये उसके एनिमी, मतलब मिरियाड जो ट्राइब है उनके सारे सोल्जर्स है ये। तो इनको मार दिया है ये बड़े से, क्या बोल सकते हैं, मॉन्स्टर ने।
ये पता नहीं कौन से, अच्छा ये जो एनिमीज है, मतलब ये जो सोल्जर्स है, ये है जैगनी ट्राइब वाले एंड ये है मिरियाड वाले। तो हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था कि इसकी जो मॉम है वो वुंग-फू सिखाती थी अपने डिसाइपल्स को, एंड जो डिसाइपल्स है, ये जो जितने भी शीफूज है, ये अलग अलग ट्राइब्स के जितने भी शीफूज है, ये उसके डिसाइपल्स थे, उसकी मॉम के डिसाइपल्स थे। मतलब इसकी मॉम देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, काफ़ी रेप्यूटेड लेडी थी इस पर्टिकुलर विलेज में, इस पर्टिकुलर जगह पे। एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, उसकी मॉम ज़्यादा पावरफुल भी होगी क्योंकि बहुत सारे चीज़ें वो सिखाती थी। ऊपर जा सकते हैं हम? एक मिनट, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी जो है दिन का समय हो चुका है, सुबह हो चुकी है, बहुत सही लग रहा है सुबह होके। वैसे देखा जाए ना, इस गेम का कॉन्सेप्ट वैसे देखा जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत सही है, मतलब बहुत सही लग रहा है। देखो ये रहा ब्रिज, ये एक ट्रक है एंड ये पूरा आगे तक टनल है आगे, एंड ये पूरा ब्रिज टूट चुका है। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे चाइल्डहुड Time विलेज is में। lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. ओके, तो पुरानी यादें जो हम लोग ताज़ा करने आए हैं, एंड चलो एक मिनट ये इंटरेक्ट कर लेता हूँ। Let's see. ओके, लेट्स सी। ओके, तो हम लोग इधर आ पहुंचे, एग्जैक्ट मिडल में हम लोग। ओके, ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकेंड। Let's see. ओके, ठीक है। हाँ, As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you become. This story is far from over. वापस हम लोग शायद से अपने पास्ट में जा रहे हैं। यप, Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. कैसा लग रहा है यार, क्यूटी बहुत क्यूटी पाई लग रहा है ये छोटा सा। ये कौन है? गूप। Here's someone who takes each day as it comes. बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। 아직 못 따라할 때 He asks how you are. Better now that you asked. Yep. 저희들 Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. what? He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Swimming. I'm into Wung-Fu. 저희들 무엇간 멀리 He understands Wung-Fu is hard. That's why your Muma only has 6 Acha. disciples. Doing just one thing helps you get more done Okay. in less time. 야도 부부엘라 He thinks you should really know how to swim by now. Okay, teach me. पता नहीं. 가tem이오냐나 Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. Okay. 원납다 뺏고 अभी हम लोग जो अबे ये क्या कर रहा है? फेंकने वाला है क्या? Oh shit! फेंक दिया. अबे ऐसे स्विमिंग नहीं सीखते. Okay, you can swim in most waters. Okay, you slowly lose Kai energy. Okay. ठीक है, अभी देखो हमें स्विमिंग आ नहीं रही है, तो हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत सही लग रहा है ये। तो ऊपर जो है ना, ऊपर एक बार है काय एनर्जी का, देखो रिफिल हो रहा है अभी। यप, तो अगर ज़्यादा टाइम अगर हम लोग रहेंगे तो वो काय एनर्जी डिप्लीट होगी, कम होगी, एंड अगर वो ज़्यादा कम हो गई ना तो हम लोग डूब जाएंगे। ठीक है,
swim back. 아직 더워. He says that wasn't too bad, was it? You almost drowned me. 아파냐? He says a feeling that you're going to drown is a great reminder of the need to learn how बहुत सही to बात कहेगा swim. सर. 이따고. But you need practice. Lots of practice. Okay. ठीक है. 이따고. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. 이따고. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. अच्छा इसकी mom है. Sanna gjorde. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. Okay. Kalino? The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that WUNG-FU is in your blood. Kalino? You should know, practice makes perfect. Taifanana numa. Kalino? You have to keep working on it if you want to be good at it. It's in there. She'll see you at the village square. Okay. Kanyala no toro. Puri kumbala muma. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. तो ठीक है, फाइनली हमने इसके मॉम को देख लिया, यू नो, जिसकी बहुत सारी बातें हो रही थी उस मिरियाड ट्राइब में इसके मॉम के बारे में, यू नो, कि ये वुंग-फू टीचर है. तो अभी फाइनली हम लोग जाने वाले हैं वुंग-फू सीखने. तो Here's another familiar face with lots on his mind. Asks how you're feeling. better now that I'm talking to you. Found anything you can use? Okay. Being nice comes easy for him. That doesn't make it less important. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. He thinks you're truly a kidling of your environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. Okay, upcycling. ठीक है, चलो. अच्छा, ठीक है, शायद से एक हमने सर्च कर लिया, दूसरे में चलते हैं. ओके ओके, ठीक है. He wonders what usefulness you found. Sometimes he's an expert, but sometimes he just does what's right. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. ठीक है. That's the spirit. You can't make a difference unless you get your hands dirty. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. ठीक है, तो शायद से हम इधर अभी क्राफ्टिंग सीखने वाले हैं. तो वेलकम टू क्राफ्टिंग. यप, क्राफ्टिंग ही है ये. You can modify existing weapons and armors, or if you're feeling creative. Okay. First, select the base. This defines which kind of weapon you'll craft. There are 3 different kinds: melee weapons, crush, one-sided slash, and two-handed slash. Acha, handle 1. Okay. Okay, ठीक है. Select the handle you want in order to be able to craft your weapon. अच्छा, तो ये शायद से sword है. Yep, ये sword है. Select the handle you want in order to able to craft your weapon.
अच्छा हैंडल है ये, तो हैंडल में हम लोग कौन सा रखे? एक मिनट। अच्छा ये सारे डैमेज भी बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है ये ले लेते हैं। ओके छोटा सा वेपन है। You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. You're not in this world to live up to his expectations, but he hopes you're never going to have to use that weapon of yours. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. Okay, वापस। Puri kumbala mua. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Then nampusa. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. Kana munta. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. Okay, gone. तो ये सवाल है क्या है मतलब gone? Katja dopuluta. Urasa durut. She won't live forever, you know that. Okay. But she intends to make the most of every day she gets, especially the ones you share together. Kana munt. Asil natu. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Bola kamun brukna. Dropal. Vasen och kasaman brut. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. Okay. Okay, तो गाइस ठीक है, इसको मदद करने के चक्कर में जो है हमें डांट पड़ चुकी है। डांट तो नहीं, वैसे काफ़ी स्वीट है इसकी मॉम। तो ये कौन है? They look determined. Better watch out. ठीक है। He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. I'm late for training. He says that it's not Oh. too late for you to turn back. एक मिनट गाइस। There's no way they'll let you pass. He wants to know who you think you are. तो गाइस ये वही डिसाइपल्स है, इसके मॉम के डिसाइपल्स है ये। मतलब इसकी जो मॉम है वो इन तीनों को शायद से वुंग-फू सिखाती है। एंड ये जो रहा ना, ये राइट में जो बंदा है, एक्सट्रीम राइट में ये छोटा सा, ये वही है, मिरिया ट्राइब वाला ही बंदा लग रहा है। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मिरिया ट्राइब में जो शिफू था ये शायद से वही है। ये बीच वाला है, ये शायद से जैगी ट्राइब का शिफू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं अपना ही दिमाग लगा रहा हूँ, तो देखते हैं। ही वांट्स टू नो हु यू थिंक यू आर। ठीक है। You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. Oh. अबे push over, defeat the disciples. भाई समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को। भाई खतरनाक हो रहा है।
अबे जल्दी जल्दी, ओह शिट, अबे मार दिया, शिट, थोड़ी के लिए रह गया। अच्छा ये कहाँ पे लेके जा रहा है अपना वेपन? Do male tu. She asks if you're hurt. What happened? Antoro, do male tu. If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. Asadudu. The most important thing is that you're okay. Bola kamu brukna. It's time to focus on your training now. Anson bara. Kanorota. You won't need excuses if you are strong in your conviction. ओके तो ठीक है। ओके तो हमारा जो वेपन है हमने जो क्राफ्ट किया था तो वो एक बंदा लेके चला गया वो। तो अभी चलते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। चलो ठीक है, इट्स टाइम टू ट्रेन वंग-फू, इट्स टाइम टू लर्न वंग-फू। ये कौन है? He is someone close to heart, doing what he does best. Amanka, jotin danka kudu. Seeing you always puts a smile on your popsy's face. He wants to know how अच्छा you इसकी feel. डैड as good as anybody, not better, I feel. Watsu, Training with Muma will make you feel better. It always does. but ya analog. He asks if you could help him too before you leave for training. if you tell me जरूर। Coffee. He'll talk to her, sure, but you know she wants you to accept responsibility for your own actions and future. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. ओके तो लॉन्ड्री पाइल, अभी भाई मतलब ट्रेनिंग करने देना है कि नहीं, मतलब कोई ना कोई आ ही जा रहा है एंड कोई काम थमा के जा रहा है। तो ठीक है, फिलहाल ये हम टास्क कर लेते हैं। एंड हाँ गाइज, सॉरी गाइज, पार्ट 1 में जो है मैंने एक गलती कर ली थी, वो थी हमें एक कैरेक्टर मिला था पार्ट 1 में जब हम लोग पास्ट में चले गए थे। एक सीन है पार्ट 1 में, तो उसमें हम लोग पास्ट में जा चुके थे जैसे अभी हम लोग हैं वैसे। तो उसमें एक कोई तो कैरेक्टर था, तो मैंने ये सोच लिया था कि वो इसका डैड है, लेकिन वो कैरेक्टर इसका डैड नहीं था, असली डैड ये है पॉप्सी। तो वो मैंने गलती कर ली थी, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो उसका डैड है, मतलब पार्ट 1 में जो एक हमें दिखा था। ठीक है, तो ठीक है, 2 हमने कलेक्ट किए क्लॉथ पाइल्स, हमें और कलेक्ट करने हैं। 1 मिनट, और कहाँ पे है? अच्छा इधर है, इधर है, इधर। ठीक है। Butsu. He's curious to see what you found. Something familiar to renew. Okay, I'm not sure. Son. He says whatever it is, it shouldn't be left forgotten at the bottom of a pile of recyclables. Jira Vabasco. Sam. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. ठीक है, जरूर। Yoshika. Says at least dirty hands are proof that you tried, and that counts. That you failed this time doesn't mean you can't succeed the next. Bestilka. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you Okay. found. तो एक और हम चीज़ सीख रहे हैं इसमें। ठीक है, ओके, 1 मिनट। ठीक है, ओके, तो हम कुछ शायद से आर्मर क्राफ्ट कर रहे हैं, या आर्मर ही क्राफ्ट कर रहे हैं, ऊपर लिखा भी है। ठीक है, क्राफ्ट कर लेते हैं।
बढ़िया, बहुत ही सही हमने सूट टाइप बना लिया. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. He knows she's already proud of you and everything you've achieved so far. You should take it with you, wear it to practice. Okay. He's sure your Muma will forgive you for not wearing the traditional outfit. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Okay, ठीक है. अभी जल्दी चलते हैं. चलो चलो चलो. Okay, finally हम लोग. ये अंदर कौन है? अंदर कोई तो है, पता नहीं कौन है. बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर जगह लग रही है. ठीक है, फिलहाल चलते हैं. ओके, ठीक है. Andro? Your Muma says it's about time you got here. ठीक है. Amu. Hopes you're as ready as you claim to be. Can't see Berry. She says Okay, shit, मैं skip कर दिया गलती से. Berry. but there's enough time left for repetition and you need it. Training dummies don't hit back. Arialoche nui mumera. Wants you to prove that with some practice first. Okay. बहुत सही लग रहा है यार, कुछ भी बोलो. पता नहीं, ये मोमेंट, ये सीन बहुत सही लग रहा है. इसमें इसकी मॉम इससे सिखा रही है. बहुत सही सीख चुका है यार, ये बहुत सही ट्रेंड हो चुका है. Arialoche nui mumera. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Okay. Inadabsunka. Thanks you for being such a good student. Polakudo. Antoro. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Aplitonumuta. Tatenko baba saktin. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Kialdo male canorutum. Says he's always thought so well of you, just like her. अच्छा, इसके पास हमें जाना है कि पता नहीं इसके पास. हाँ, ये रहा, ये छोटा सा जो ग्रास हॉपर है, इसके पास चलते हैं. कहाँ पे जा रहा है ये? अबे शिट, पकड़ने तो दो. अबे कैसे पकड़ो? अच्छा, ओ से पकड़ना है. ओ ठीक है. मैं यूज ही नहीं कर रहा था वो बटन. ओ शिट, ट्रायंगल दबाना था क्या? अबे यार, एक बार इसको इस तरफ आने दो, उसके बाद पकड़ता हूँ मैं इसको. शिट, ट्रायंगल का ऑप्शन आ रहा था. एक मिनट, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ. बढ़िया. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Yep. Kialdo male canorutum. Figuring that out is half the fun. Canoruta. Arialoche nui mumera. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Kudutuku. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Will it record what happens to me? एक मिनट, ठीक है. Berry. You should think of it as watching over you when she Oh, comes. okay. Taifanamenuma. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Berry. Says a good rest makes you ready for tomorrow. Rest and you'll find strength for tomorrow. अब ये कौन है? Nothing could stop Luka Lupin from setting the world on fire.
ओके Your Muma urges you to blaze a trail. ओके तो पता नहीं A burnt kidling will learn to dread पता नहीं fire. कौन था वो, मतलब क्यों आग जलाई उसने, शायद से वो कोई वर्ल्ड ईटर है, पता नहीं क्या है। ओह That's just adding fuel to the flames. गाइस अभी हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। Give it a last इस burst विलेज के and साथ क्या हुआ था वो हमें पता चलेगा, कैसे तहस नहस हो गया था इसका विलेज। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, अभी देखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं बिल्डिंग के बाहर। Hai fanana numa. Your Muma says this is She it. must fight. The time has come. She Okay. must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Why is it there? Okay, why is it here this time? Kamonu. He wants to destroy her. The time to fight is coming, Oh. whether she's ready for it or not. तो लूपा लुपिन इससे ये मारने के लिए आया है इसकी मॉम को। Aria loken mumera. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Yo no massa manduru. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Veri pial tu ma. She had a life before you were born, you know. Darker and less fun. Here it comes. The past coming to haunt the present. Okay. Oh shit. भाई कुछ कर सकते हैं क्या अपन? ओ ओ ओ कुछ है ही नहीं हमारे पास। शिट यार, चलो मारो मारो इसको। जल्दी 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 जल्दी। You must go through fire and water to make it out of here. Oh, Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. finally. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. ठीक है, चलो हमें सामने की तरफ जाना है। अबे यार ये आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, शिट यार। अभी मत आना यार बीच में। ओह शिट यार। Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love
and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. ओ भाई यार As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. ओके तो गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल था वो सीन जो भी हुआ अभी एंड फिलहाल हम लोग ये Let's see. साइन पोस्ट देख लेते हैं ठीक है हम लोग इधर है ओके तो ये था वो विलेज ठीक है ओके वैसे देखा जाए तो काफ़ी सैड स्टोरी है यार इस कैरेक्टर की यू नो बहुत सारी चीज़ें इसने यू नो लूज़ की ओके क्राफ्टिंग मेन्यू ठीक है ओके गाइस ये कोई तो मॉन्स्टर टाइप है थोड़ा सा The tribe's caught a fluffy hulk. Better watch out. It's no pet. ठीक है They couldn't keep it down. Fluff hulk's on the loose. बढ़िया बहुत ही बढ़िया अभी क्या खा गया क्या मेरे शिट Running low. Okay, finally. You gave them no choice but to take it down, even though they'd planned to take the fluff hulk out to the far Fnacky leaves and let it go. They've received news a Ronin had strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. A group of myriad crusaders already headed out to Jagni's Mercadorpus outpost and are waiting for you there. You should hurry there and help them best the outpost. The Myriad tribe is prepared to fight to the death for souls that will be forever lost if not saved. Okay. ठीक है तो अभी हमें जो है जाना है जैगनी ट्राइब की तरफ एंड आउटपोस्ट की तरफ एक मिनट कौन सा आउटपोस्ट बोला था उसने एक मिनट ओके ठीक है मेरी यार ट्राइब है मीट द वॉर पार्टी ओके ठीक है तो गाइज
फिलहाल जो है मैं ये वाला पार्ट जो पार्ट 2 है मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस फन गेम, फन पार्ट. गेम तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सही लग रही है अभी तक. एंड जो भी है मतलब डू लेट मी नो कैसा लग रहा है आप लोग को अभी तक. 2 पार्ट्स हमने खेले, मतलब ये रहा अपना सेकंड पार्ट. एंड अगर आपको अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेम स्टार. मिलेंगे बहुत जल्दी पार्ट 3 के साथ. टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू सून गाइस. बाय.